Assalamu alaikum students. Today we are starting 970942 May June 23. The starting time is, let's say it is 11:05, and when we'll finish, we'll write the time here. So now, what we have in this paper, question number 1. A particle of mass 1.6 kilogram is dropped from a height of 9 meter above horizontal ground. The speed of the particle at the instant before hitting the ground is 12. Find the work done against the air resistance. Okay, a particle is here, drop to this. At this point, uh, the height is 9 meter. At this point, velocity is 12 meters per second. Mass of the particle is 1.6. Therefore, weight of the particle is 1.6 multiplied by 10, 16. We have to calculate the work done against air resistance. तो अब आप देखिए what will be the work done. Work done क्या काम कर रहा होगा? Mechanical energies को change कर रहा होगा. So, work done is basically change in mechanical energies. So, mechanical energies at top, मैकेनिकल एनर्जी जो है टॉप पर कितनी आ रही है जरा चेक करते हैं. द फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी एट टॉप प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप. काइनेटिक एनर्जी एट टॉप इज हाफ mv स्क्वायर, मास इज 1.6, velocity is 0, plus potential energy at top is mass is 1.6 m, gravity is 10, height is 9. So at top the mechanical energy is 144, and mechanical energy at bottom will be again half, mass 1.6 m, v square, velocity is 12. At the bottom potential energy is 0. At the bottom potential energy is 0. Therefore, mechanical energy at bottom will be 115.2. So, work done against air resistance. कितना काम करना पड़ा? स्टार्टिंग में 144 की मैकेनिकल एनर्जी थी हमारे पास, और एट द एंड कितनी मैकेनिकल एनर्जी रह गई? 115.2. रिजल्ट कितना आया? 28.8 जूल का वर्क डन करना पड़ा हमें ड्यू टू द डिफरेंस इन द मैकेनिकल एनर्जीज. सो दिस इज question number 1 about work power energy. Second one, question number 2. Two particles A and B of masses 3.2 and 2.4 kilogram respectively lie on a smooth horizontal table. A moves toward B. Okay. Here is particle A. Here is particle B. A moves towards B with a speed of V and collide with B, which is moving towards A with a speed of 6 meters per second. In the collision, the two particles comes to rest. Before is this condition where the velocity is V, and here the velocity of B is 6, mass of A is 3.2, mass of B is 2.4. And after, the after situation is both particles having both part in the collision, the two particles comes to rest. After, the both velocities are 0. The both velocities are 0 after that. Now, here is a question in which the first condition, before condition is here. A is moving towards B, B is moving towards A moving with a velocity of V, B moving with a velocity of 6. And after condition, the both particles are in rest. Find the value of V. So as we know that it's a question of momentum,
before equals to after. What is the condition of before? 3.2V minus 6 into 2.4 equals to after is 0. By this, V is 4.5. By this, V is 4.5, a very simple question. Now, after that, what we have next? Next is find the loss of kinetic energy of the system due to collision. Loss in kinetic energy आपने calculate करना है. Now, I'm doing part B here. I'm doing part B here. So kinetic energy before. So kinetic energy before is first for A, half mv square. Mass is 3.2. Velocity is 4.5, which we have calculated in the previous part. Plus kinetic energy for this second one is half. Mass is 2.4 and velocity is 6 square. By this 75.6 की kinetic energy. What? Find the loss of kinetic energy of the system due to collision. अब आप देखिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो काइनेटिक एनर्जी हो और फिर एंड में जो काइनेटिक एनर्जी हो. अगर हम कहते हैं बिफोर काइनेटिक एनर्जी इज दिस एंड आफ्टर काइनेटिक एनर्जी, what is the condition of kinetic energy after the collision? After the collision, the both particles are in rest. The both particles are in rest. तो after की kinetic energy क्या हो गई? 0. Therefore, change in kinetic energy कितना हुआ हमारे पास? Before 75.6 minus after means kinetic energy पूरी लॉस कर गए हम, क्योंकि उसके बाद कोई ट्रैवलिंग नहीं हुई कोलिजन के बाद. तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? 75.6 का लॉस आ गया इन द काइनेटिक एनर्जी. नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम क्वेश्चन. क्या कहा गया जनाब फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में? वी हैव टू प्रूव एन इक्वेशन. एक इक्वेशन हमें प्रूव करना है. और जब भी एंगुलर फोर्सेस वगैरह का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपने इसको क्या करना है? कंपोनेंट ब्रेकिंग कर लेनी है. तो कंपोनेंट ब्रेकिंग मैं कर रहा हूं. हियर दिस वन, हियर दिस वन. वी कैन से दैट इट इज 30 साइन थीटा एंड दिस इज 30 कॉस थीटा. जब पी का कंपोनेंट ब्रेक होगा, दिस वन एंड दिस वन. तो बच्चों this component is P sine theta, and this component, horizontal component, is P cos theta with negative sign as it is going in negative direction. And after that towards right, 15 को जब ब्रेक किया गया, this one is, here it is 15 sine alpha, and this one is 15 cos alpha. और जब 33 को ब्रेक किया गया, so this one is 33 sine alpha with negative sign as going downward, and this one is 33 cos alpha. These are the components. Now, tan alpha is 4 upon 3. Tan alpha is 4 upon 3. If tan alpha is 4 upon 3, it means it is tan equals to opposite over adjacent. So hypotenuse side is 5. By this triangle, we can easily calculate sine and cos values. Now I'm doing summation of the forces in this direction equals to 0. Summation of the forces in this direction equals to 0. So what forces we have in this direction? The first force, I'm writing 15 cos alpha. The second, 30 cos theta with minus sign. Then minus sign के साथ p cos theta और एक और 33 cos alpha equals to 0. Now 15 cos alpha को हम लिख सकते हैं by using this triangle जो ऊपर रेड ट्राइंगल बना हुआ है.
base over hypotenuse minus 30 cos theta minus p cos थीटा प्लस 33 कॉस अल्फा को फिर लिखा जा सकता है 3/5 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर रहे हैं मजीद इसको। एक्चुअली वी हैव टू प्रूव एन इक्वेशन। सुना, जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इट विल बी नेगेटिव टर्म्स को मैं अगर राइट साइड पर ले जाऊं तो इट विल बी पी कॉस थीटा पॉजिटिव हो गया, 30 कॉस थीटा ये भी पॉजिटिव हो गया, इक्वल्स टू रिमेनिंग क्या रहा 15 multiplied by 3/5 plus 33 multiplied by 3/5. So this will give us 144/5. So this is, let's say this is after that 30 cos theta equals to 144/5 minus, sorry, now I'm making cos theta as subject. So cos theta equals to 144/5 times p plus 30. 5 times p plus 30. Now, अब आप देखिए यहां से cos थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। अब हम क्या कर रहे हैं, समीशन ऑफ द फोर्सेस, समीशन ऑफ द फोर्सेस in this direction equals to 0. So what forces we have, what forces we have in this direction? The forces are 30 sine theta plus 15 sine alpha minus p sine theta minus 33 sine alpha equals to 0. Now 30 sine theta ऐसे ही रहा, प्लस 15 साइन अल्फा की जगह पर अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल 4/5 माइनस पी साइन थीटा ऐसे ही रहा, माइनस 33 साइन अल्फा की जगह फिर से 4/5 ना इक्वल्स टू 0 अगेन। अब हम इसको लिख सकते हैं 30 साइन थीटा माइनस पी साइन थीटा इक्वल्स टू, जब इनको सिंप्लीफाई करके 15 इंटू 4/5 माइनस 33 इंटू 4/5 लिखा गया तो इट इज 72/5। And now, according to this, sine theta equals to 72/72/30 minus p, and 5 is here. 72 divided by 5. 72 divided by 5 is 14.4 over 30 minus p. And here, 144 divided by 5 is 28.8 divided by p plus 30. Now, we have to prove this. How can we prove this? Can I write here, सब जानते हैं इसको, sin square theta plus cos square theta equals to 1. Sin square theta plus cos square theta equals to 1. एक्चुअली राइट साइड पर 1 लिखा हुआ है ना, तो इस वजह से मेरा जहन चला कि यार दोनों का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो अगर साइन की वैल्यू हम यहां रख दें, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन वी हैव कैलकुलेटेड 144, सॉरी 14.4 divided by 30 minus p होल स्क्वायर। कॉस की वैल्यू अगर यहां रख दें 28.8 divided by p plus 30 equals whole square equals to 1, and this we have to prove for 4 marks. Calculate the value of sine and cos, substitute in the equation in the identity sine square theta plus cos square theta equals to 1. This is the first part. This is, wait. Okay, now, after this, what is the second part B? Verify that P equals to 6. Satisfy the equation and find the value of theta. क्या कहा गया?
P6 जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब देखिए आप जरा, इक्वेशन को हम लेकर जाते हैं पार्ट बी पर। वेरीफाई दैट P equals to 6 satisfy the equation। सुना, अगर यहां पर P की जगह 6 रखा जाए, 144 14.4 ओवर 30 minus 6 is 24 whole square plus 28.8 over 36 whole square equals to 1। So 1 equals to 1। Yes, P satisfy कर रहा है इक्वेशन को। And after that we have to calculate the value of थीटा। हमें थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। We need to calculate the value of theta। How can we calculate the value of theta? How can we calculate the value of theta? अगर मैं How can we calculate the value of theta? अगर मैं लिखता हूं cos theta equals to 28.8 over P is 6, so it is 36। So what is the value of theta? The value of theta will be, calculator in degrees, cos inverse of 28.8, cos inverse of 28.8 divided by 36, it is 36.9। The value of theta is 36.9। ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। इसको हम पेस्ट कर देते हैं अपने पार्ट बी पर। आफ्टर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ थीटा इन पार्ट बी, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। An athlete of mass 84 kilogram is running along a straight road. Initially, the road is horizontal. Initially, the road is horizontal. And he runs at a constant speed of 3 meters per second. The athlete produces a constant power of 60 watt. Find the resistive force. Okay, for example, athlete, here is the athlete। एथलीट पावर की वजह से कुछ अपने आप को ड्राइव कर रहा होगा, मींस ड्राइविंग फोर्स फॉर एथलीट, जिसकी वजह से एथलीट मूव कर रहा है। पावर आपको कितनी दी गई है? 60 की दी गई पावर। रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है जो एथलीट पर आ रहा है, एंड नथिंग एल्स। वेलोसिटी ऑफ द एथलीट इज 3। वेलोसिटी ऑफ द एथलीट इज 3। एज वी नो दैट power equals to force into velocity। So can I calculate force? And this is called the driving force। So power is 60 and velocity is 3, so the force is 20। Therefore summation of the forces, अब आप देखिए in this direction, इस डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस हैं? In this direction equals to 0। Why it is 0? Because it is moving with a constant speed। So driving force minus resistance equals to 0। Therefore the resistive force is 20। This is the first part, to calculate the resistance of athlete। After that, the athlete then runs up a 150-meter section of the road, which is inclined at 0.8 degrees, which is inclined at 0.8 degrees। ठीक हो गया? 0.8 degrees पर ये section inclined है। Okay, here is 0.8। Now, the speed of the athlete at the start of the section is 3। At the start of the section, the speed is 3। At the start of the section, the speed is 3। And he now produces a constant driving force of 24। Driving force is 24, and this is the speed, meters per second। The total resistive force which acts on the athlete along this section of the road is 13 Newton। 13 Newton का constant resistance आ रहा है।
use an energy method to find the speed of athlete at the end of 150-meter section. The complete section is of 150 meters. हमें जब एथलीट यहां पर पहुंच जाएगा, we need to calculate, find the speed of the athlete. We need to calculate the final speed of the athlete. Now, for this, I am able to calculate the perpendicular height of this section, which is equals to angle is 0.8, hypotenuse is 150. So the perpendicular height will be 150 sine 0.8. क्यों मैंने ये कैलकुलेट की? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें ये यूज करना होगी 2.09. Now, after that, I am using energy equation. Energy equation is mechanical energies. Energy equation is mechanical energies, sum of mechanical energies is equal to work done. मैकेनिकल एनर्जीज में क्या क्या आ जाएंगी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. दोनों एनर्जीज क्यों आ गई? क्योंकि हाइट ऊपर की तरफ जा रहा है एथलीट. वर्क डन क्या हो जाएगा? एक वर्क डन हो जाएगा वर्क डन टू इंक्रीज द स्पीड माइनस वर्क डन टू डिक्रीज द स्पीड, जो कि रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से आएगा. सो दिस वन विल बी द एनर्जी मेथड. काइनेटिक एनर्जी के ऊपर अब हम काम कर रहे हैं. द फर्स्ट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ मास ऑफ द एथलीट इज 84, हाफ एम वी स्क्वायर. फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी इज 3. ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गया. पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप mgh, so it will be 84 g 84 multiply by gravity, it is 10 mg. h height is 2.09, जो कि हमने कैलकुलेट की थी किससे? जो कि हमने कैलकुलेट की थी 150 साइन 0.8 के थ्रू. सो इट इज 2.09. ये आपके पास. और बॉटम पर तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? वो तो जीरो हो जाएगी, तो वो लिखने की नीड नहीं है. इक्वल्स टू वर्क डन ऊपर जाने का वर्क डन. वर्क डन किसके इक्वल है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो जनाब 24 की ड्राइविंग फोर्स है, तो वर्क डन कितना हुआ? 24 मल्टीप्लाई बाय 150. और रेजिस्टिव फोर्स कितनी है? 13 की. तो रेजिस्टिव वर्क डन कितना हो गया? 13 मल्टीप्लाई बाय 150. सो अकॉर्डिंग टू दिस, इन दिस इक्वेशन अब आप देख लीजिए, सिर्फ एक फाइनल वेलोसिटी अननोन है हमारे पास. सिर्फ एक फाइनल वेलोसिटी अननोन है. यहां से आप फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर्स. फाइनल वेलोसिटी अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट की जाए, आई एम कैलकुलेटिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कैलकुलेटर, not showing the calculation. It's not necessary to show any calculation here. Just आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी को. सो अकॉर्डिंग टू दिस, द फाइनल वेलोसिटी इज the final velocity is 2.53. The final velocity is 2.53 meter per second at the top position of this inclined plane. Now, after that, what is next? Question number 5. बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके. क्या कह रहे हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.6 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन अ रफ प्लेन. रफ प्लेन को जहन में आते ही आपके पास फ्रिक्शन की फोर्स आनी चाहिए, which is inclined at angle 35 to the horizontal. The particle is kept in equilibrium by a horizontal force of magnitude p Newton, acting in a vertical plane containing a line of greater slope. The coefficient of friction between mu आपको दे दिया गया. Find the least possible value of p. लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी का मतलब क्या है? इस पी फोर्स ने पार्टिकल को सिर्फ मूव होने से रोका हुआ है. पार्टिकल को सिर्फ मूव होने से रोका हुआ है, राइट? पार्टिकल मूव कहाँ करना चाह रहा है? पार्टिकल मूव करना चाह रहा है नीचे की तरफ. तो बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगी? फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होगी ऊपर की तरफ.
Here is the frictional force. Here is the weight of particle. Particle 0.6 का है, तो weight कितना हो गया? 0.6 into 10 is 6. Component of weight, this is 6 sine 35, and this is 6 cos 35. Normal reaction is here. Normal reaction is here. P की फोर्स, इसको भी जरा अब आप कंपोनेंट में ब्रेक कर दीजिए. Here, this one and this one. अब आप देख लीजिए जरा, according to trigonometry, this P force is horizontal force, means it is parallel to the ground. So if we make a Z, then according to Z formation, this angle is also equals to 35 degrees. So by this component will be P sine 35, and this component is P cos 35. These are the two components. Now, after that, we have to start working. The first, I'm calculating summation of the forces perpendicular to the plane equal to 0, as there is no movement perpendicularly. So it will be R minus 6 cos 35 minus P sine 35 equals to 0. These are the three forces. So these are the three forces. Now, can I say that R equals to P sine 35 plus 6 cos 35. We can't do more with this perpendicular component. Now, summation of the force in this direction equals to 0, parallel to the plane. Direction नीचे की तरफ क्यों लिया? क्योंकि particle नीचे की तरफ जाना चाह रहा है. So now, it will be 6 sine 35 minus P cos 35 minus the frictional force equals to 0. Now, 6 sine 35 minus P cos 35, and frictional force is mu R. Mu is given 0.4. And what is R? R is P sine 35 plus 6 cos 35 equals to 0. Now, according to this, अब जरा working start करते हैं. 6 sine 35 is 3.44 minus 0.82 P minus, जब 0.4 मल्टीप्लाई होगा sin 35 से, तो it will be minus 0.23 P, और 0.4 जब मल्टीप्लाई होगा 6 cos 35 से, तो minus 1.97 equals to 0. So according to this, we are able to calculate the value of P, and the value of P is 1.41. The value of P is 1.41. A question of 5 marks. And again, a simple question, just component breaking and summation of the forces equals to 0. Now, question number 6. Question number 6 is question of kinematics. क्या कहा गया question number 6 में? A particle P starts at rest and moves in a straight line from a point O at time t second after leaving O. The velocity is given by this. Equation आपको given दी गई. P has velocity, this is show that B and okay. Velocity की equation आपको दी गई है pt plus ct power 3/2. Condition आपको दी गई, P has velocity 8 when time is 4. Velocity को 8 और टाइम को 4 रख रहे हैं. अब हम वेलोसिटी को 8 और टाइम को 4 रख रहे हैं, तो इट विल बी 4b. टाइम की जगह पर 4 रखा तो 4b, और प्लस जब यहां पर 4 रखा तो इट इज 8c. होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय 4, सो इट विल बी 2 इक्वल्स टू b plus 2c and b equals to 2 minus 2c. The first equation. Second condition, when velocity is 13.5, time is 9.
वेलोसिटी की जगह 13.5, टाइम की जगह 9, सो 9b प्लस 27c, सो 13.5 इक्वल्स टू 9b की जगह पर 2 माइनस 2c प्लस 27c. According to this, 13.5 equals to 9 to the 18 minus 18c plus 27c. And finally, the value of c is minus 0.5. And if c is 0.5, then what is the value of b? अगर यहाँ पर हम रखते हैं, the value of b is 3. b and c की values हमने calculate कर ली. Now, in a b part, find the acceleration of p when time is 1. The equation of velocity, I'm writing equation of velocity here. What is the equation of velocity? With the value b and the value c. B is 3, so it is 3t. And c is minus 0.5, matlab minus 1 upon 2, t power 3 upon 2. We need to calculate acceleration. So differentiate the velocity and get the equation of acceleration. So it will be 3 minus half ऐसे ही रहा, पावर नीचे आई, पावर में से 1 minus, so it will be half. So the acceleration equation will be 3 minus 3 upon 4 under root t. टाइम की जगह पर अगर 1 रखा जाए, टाइम की जगह पर अगर 1 रखा जाए, so this one will be, the acceleration will be 9 upon 4. The acceleration is 9 upon 4. This is the second part, again a simple question. And after that, find a positive value of t when p is instantaneously at rest. P instantaneously at rest, it means velocity is 0, means 3t minus 1 upon 2 t power 3 upon 2 equals to 0. Now, अब हमें क्या करना होगा बच्चों? वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम. हमें टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करना है जहां पर इंस्टेंटेनियसली रेस्ट है, वेलोसिटी जहां पर 0 है. चेक करते हैं किस तरीके से होगा ये. सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको. एलसीएम लिया 2 से, तो 6t माइनस टी पावर 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0. ये जब पावर फ्रैक्शन में आ जाती है स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप लोग इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा. 6t इक्वल्स टू टी पावर 3 अपॉन 2, उधर ले गए, टी को अपॉन में लेकर आए, तो क्या हो गया? 3 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 6. एंड टी पावर कितनी हो गई? 1 अपॉन 2 equals to 6. So therefore, what is the value of time? The value of time is 36. The value of time is 36. टाइम 36 हो रहा होगा जब वेलोसिटी 0 होगी. अब इसके बाद कहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम o एट दिस इंस्टेंट. डिस्टेंस भी हमें कैलकुलेट करना है. तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर डिस्टेंस हम क्या करेंगे? वेलोसिटी की इक्वेशन को इंटीग्रेट किया जाएगा डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए. जब इंटीग्रेट किया जाएगा किसको? 3t माइनस हाफ टी पावर 3 अपॉन 2 इसको. तो जरा चेक करते हैं क्या वैल्यू आ रही है. 3t² डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ ऐसे ही रहा, पावर में 1 ऐड, 3 अपॉन 2 प्लस 1 इज 5 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 2 विल गिव अस 2 अपॉन 5 प्लस c. इट विल बी 3 अपॉन 2 t² माइनस 2 and 2 cancel out, 1 upon 5 t power 5 upon 2 plus c. Now we have to calculate the value of c first. In the question, जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तो लिखा हुआ है अ पार्टिकल स्टार्ट्स एट रेस्ट एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ पॉइंट ओ. पॉइंट ओ से ही वर्किंग स्टार्ट हो रही है. इट मींस इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएगी? व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, टाइम इज 0. और डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम 0 रखने पर c की वैल्यू क्या आ रही है? वो भी 0 आ रही है. तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम इज 36, कैलकुलेटर में वैल्यूज रखकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं. और जब कैलकुलेटर में वैल्यू रखकर कैलकुलेट की गई, सो द रिजल्ट इज
Result is 388.8. This is the displacement. This is the displacement when time is 36. And after that, find the speed of P at the instant it returns to O. Returns to O पर क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है. डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हम ऊपर बना चुके. क्या बनाई थी? 3/2 टी स्क्वायर -1/5 t⁻5/2 इक्वल्स टू 0. फिर वही पावर फ्रैक्शन में आ गई. परेशान इसमें होने की जरूरत नहीं है. हम इसको लिख रहे हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं. जब एलसीएम लिया गया तो इट विल बी, द एलसीएम इज 10, सो इट विल बी 15 टी स्क्वायर -2 t⁻5/2 अपॉन वाला 10 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई हो गया. सो 15 टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 t⁻5/2. नाउ 15/2 equals to t⁻5/2 -2. So t⁻1/2 equals to 15/2. And what is the value of time? The value of time will be 56.25. Find the speed. At this point, we have to calculate the velocity. What is the equation of velocity? Equation of velocity हमारे पास क्या थी? 3t -1/2 t⁻3/2. इसमें अगर आप टाइम रख दें 56.25, तो जरा चेक कीजिए वेलोसिटी कितनी आ रही है बाय द कैलकुलेटर. द वेलोसिटी विल बी, the velocity will be 42.2. The velocity will be 42.2. So this is the velocity at this time. Hopefully it is clear, not a difficult question. And after that, question number 7. बच्चों एक चीज और ध्यान में रखिएगा, डायग्राम देखकर मत डरा कीजिए कि पता नहीं कैसी डायग्राम बनी हुई है. आपने अपनी वर्किंग करनी है. देखते हैं जनाब क्या कहा गया इस डायग्राम. Two particles P and Q, masses 2 and 0.25 respectively, are connected by the string with 30 degrees. Okay, 3 points A, B, and C lie on a line of greatest slope. Slope of the plane with AB 0.8 meter. Okay, particle P is released from rest. Particle P को रिलीज किया गया तो Q ऊपर जाने लगेगा, P नीचे की तरफ आने लगेगा. The part of the plane from A to B is rough. A से B तक rough है portion. With coefficient of friction given, the part of the plane from B to C is smooth. B से C तक smooth है. ठीक है. Find the acceleration of P between A and B. A और B के दरमियान में acceleration. तो जनाब हमें मालूम है स्प्रिंग के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं. टेंशन एंड हियर इट इज वेट. और वेट कितना हो जाएगा? 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 2.5. फॉर P, हियर इज द टेंशन, हियर इज द टेंशन. P का अगर हम वेट कंपोनेंट लेते हैं तो P का वेट कितना है? 2. तो वेट वेट कितना हो गया? 20. और अगर इसको अपने कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं सो इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, एंड दिस विल बी, व्हाट इज दिस? दिस इज 20 sin 30. दिस इज 20 sin 30. 20 sin 30. And what is this? This is 20 cos 30. Here is the normal reaction. फ्रिक्शनल फोर्स कहां पर होगी? फ्रिक्शनल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में ही हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में ही हो जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स भी, क्योंकि पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है. नाउ अब आइए वर्किंग स्टार्ट करते हैं. आई एम डूइंग पार्ट ए हियर. समीशन ऑफ द फोर्सेस एट पी. पी के ऊपर हम बात कर रहे हैं. समीशन ऑफ द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वल टू 0 एज देयर इज नो मूवमेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन. क्या क्या फोर्सेस हैं? r माइनस 20 cos 30. और कोई फोर्स नहीं है. इक्वल्स टू 0. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? द वैल्यू ऑफ r इज 20 cos 30. ये तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास. अब अगर हम लिखते हैं समीशन ऑफ द फोर्सेस,
पैरेलल टू द प्लेन इक्वल्स टू नॉट जीरो इक्वल्स टू एम ए, क्योंकि मूवमेंट है। तो क्या क्या फोर्सेज आ रही हैं जरा चेक करते हैं। सबसे पहले तो आई है 20 sin 30 माइनस द फ्रिक्शनल फोर्स माइनस द टेंशन इक्वल्स टू एम ए 2 ए। नाउ अब हम लिख सकते हैं 20 sin 30 minus the frictional force. Frictional force is mu r. Mu is given, which is 0.3. 0.3. And r, what is r? R is 20 cos 30 equals to t को मैं उधर ले गया +2a. So finally हम लिख सकते हैं t+2a equals to 4.8. सिंप्लीफाई करने के बाद इसको बाय यूजिंग आवर कैलकुलेटर। ये तो p के ऊपर बात हो रही थी। एट q, अगर q के ऊपर बात की जाए तो समीशन ऑफ द फोर्सेस q ऊपर की तरफ जा रहा है इक्वल टू एम ए। तो क्या हुआ बच्चों, t-2.5 इक्वल टू मास कितना है 0.25 a। यहां से t की वैल्यू अगर हम रख दें इस इक्वेशन में, p वाली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगी 2.5 प्लस 0.25a प्लस 2a equals to 4.8, and the value of acceleration the value of acceleration will be 1.02. एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना थी, हमने फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर ली। नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी हैव इन द सेकंड पार्ट, पार्ट 2, हेंस फाइंड द स्पीड ऑफ p एट c। हमें स्पीड मालूम करनी है p की, किस पर, c पर। इस जगह पर एट सी हमें इस जगह पर स्पीड मालूम करनी। ना अब देखिएगा कैसे हम इसकी स्पीड मालूम कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, आई एम डूइंग ए सेकेंड पार्ट हियर। हाउ कैन वी कैलकुलेट द स्पीड एट सी। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्पीड एट बी। स्पीड एट बी, इनिशियल स्पीड क्या है, अगर मैं सिर्फ ए बी को देखता हूं, इनिशियल स्पीड क्या है 0। एक्सेलरेशन ए से बी तक आने के लिए 1.02। फाइनल स्पीड हमें मालूम करना है, तो बाय यूजिंग वी स्क्वायर, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 0.8 का, बाय यूजिंग वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 +2, एक्सेलरेशन क्या है 1.02, डिस्टेंस कितना है 0.8। बाय दिस हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, and the final velocity according to the calculator, the final velocity is 1.28. The final velocity is 1.28. So at this point the velocity is 1.28 meters per second. अब आप देखिए A से B तक की तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, लेकिन B से C तक की इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और हमें C के ऊपर वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम इसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो रही है। ए से बी तक रफ था प्लेन, बी से सी तक स्मूथ है, तो एक्सेलरेशन चेंज होगी। तो एक्सेलरेशन के लिए थोड़ा सा हमें वर्किंग दोबारा करना होगी। समीशन ऑफ फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू एम ए। क्या क्या फोर्सेस हैं जनाब, पी की वही तमाम फोर्सेस लिख दीजिए आप। एक तो आ रही है 20 sin 30 माइनस टेंशन की फोर्स, फ्रिक्शन की फोर्स अब नहीं होगी। मास कितना है जनाब इसका 2, मास है इसका 2, और एक्सेलरेशन इज दिस। हम लिख सकते हैं t+2a इक्वल्स टू 20 sin 30। ये हम बात कर रहे हैं एट p, और अगर एट q बात करें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। q के लिए तो तमाम चीजें वही रहेंगी, और इक्वेशन क्या हमने पहले बनाई थी, t-2.5 इक्वल्स टू 0.25a।
इन दोनों को अब करना है साइमल्टेनियसली सॉल्व। तो टी की वैल्यू कितनी है? टी की जगह पर रखते हैं 0.25a प्लस 2.5 प्लस 2a equals to 20 sine 30. According to this, the acceleration will be, according to this, the acceleration will be 3.3. तो जनाब B से लेकर C तक की एक्सेलरेशन हमें मिल गई कितनी? 3.3। इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है, फाइनल वेलोसिटी मालूम करना है, डिस्टेंस मौजूद है, फिर वही v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 1.28 प्लस 2, एक्सेलरेशन अब 3.3 वाली आएगी, और डिस्टेंस कितना? 1.2। अकॉर्डिंग टू दिस द फाइनल वेलोसिटी विल बी, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, एंड इट विल बी 3.1। द फाइनल वेलोसिटी इज 3.1। This is a second part. Hopefully it is clear. And after that, what is next? The next is part B. Find the time taken for P to travel from A to C. A से C तक आने के लिए जो इसने टाइम लगाया है वो हमें कैलकुलेट करना है। Let's say this is A, let's say this is B, let's say this is C. कंडीशंस हम लिख लेते हैं बच्चों, कंडीशंस हम लिख लेते हैं। ए के ऊपर क्या कंडीशन थी? इनिशियल वेलोसिटी थी ए के ऊपर 0। बी के ऊपर वेलोसिटी जो आ रही थी वो कभी इनिशियल कभी फाइनल यूज कर रहे थे, लेकिन हम इस वेलोसिटी को 1.28 लिख रहे हैं मीटर्स पर सेकेंड। और सी के ऊपर जो हमारी वेलोसिटी आई थी वो आई थी 3.1। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.8 का, और ये वाला डिस्टेंस आपको दिया गया है 1.2 का। हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी का। तो टाइम किसके इक्वल हो जाएगा? टाइम हो जाएगा v माइनस यू ओवर ए के ऊपर। सो टाइम ए बी कैलकुलेट करेंगे प्लस टाइम बी सी कैलकुलेट करेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा हमारे पास। सो ना, टाइम ए बी, फाइनल वेलोसिटी एट ए बी 1.28, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। ए से बी तक की जो एक्सेलरेशन है हमारे पास, ए से बी तक की जो एक्सेलरेशन है हमारे पास वो हमने कैलकुलेट की थी पहले। ए से बी तक की एक्सेलरेशन थी 1.02। ए से बी तक की एक्सेलरेशन थी 1.02। मैं यहां पर एक्सेलरेशन भी लिख दूं, यहां पर थी 1.02, और इस जगह पर एक्सेलरेशन थी हमारी 3.33। ना, एक्सेलरेशन आ गई 1.02 प्लस टाइम बी से सी तक के लिए फिर फॉर्मूला अप्लाई किया। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई अब? 3.1। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 1.28, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन कितनी है इसकी? 3.33। कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो टोटल टाइम हमारे पास कितना आया? द टोटल टाइम इज 1.8। होपफुली दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। दोनों पोर्शन ए से बी तक का टाइम निकाला, बी से सी तक का टाइम निकाला, दोनों को ऐड कर दिया तो ये फाइनल हमारे पास रिजल्ट डेवलप हुआ। नेक्स्ट, हियर इज दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। तमाम ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, और स्टार्ट हमने किया था we have started this paper at 11:05 and 11:55 is the ending time। 11:55 पर हमने फिनिश कर दिया। इट मींस टोटल हमने 50 मिनट्स यूज किए पेपर सॉल्व करने में, एंड द पेपर हैज नेक्स्ट टाइम कितना होता है पेपर का? 75 मिनट्स maximum time। पेपर का मैक्सिमम टाइम है 75 मिनट्स, एंड वी हैव कंप्लीटेड इन द 50 मिनट्स, राइट? सो this is all about the today's class, and inshallah, and the next class is for P3. I'm going to upload this paper at the channel। वो आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई confusion हो तो उसमें clear हो जाएंगी। फिर भी कोई confusion हो तो you guys can WhatsApp me anytime, right? Thank you very much। See you inshallah in the next class। Allah Hafiz।